offer an interest rate of 10% per annum. This interest is, however, paid at the end of each year. After 3 years, Tony and Anita withdraw their money. Tony receives an interest of 3,000 rupees, and Anita receives an interest of 3,310 rupees. But how is this possible? They both invested the same amount at the same time with the same rate of interest. Still, the amount of interest they received was different. Let's find out how. Tony received an interest of 3,000 rupees, whereas Anita received an interest of 3,310 rupees. The interest rate offered by both the banks was the same. Surely, there must be some difference in the way the interest was calculated by the two banks. Can you tell what that difference is? What is the difference in the way the interest and then calculated at both the banks? एक होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो होता है, सिंपल मेथड का यूज करते हैं, T into T into R by हो गया, तो उससे सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा, और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तब हमारे निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसमें क्या क्या गिवन होता है? टाइम, रेट, प्रिंसिपल। रेट और टाइम जो होता है उसमें एक होता है हाफ ईयरली, एनुअली। एनुअली में कोई चेंज नहीं करना होता रेट और है टाइम में, लेकिन हाफ ईयरली में क्या करना पड़ता है कि रेट में 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करके फिर हम आगे करते हैं। अगर हाफ ईयरली गिवन है तो, क्वार्टरली गिवन है 4 से करेंगे, रेट में 4 से डिवाइड, टाइम में 4 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह का ये है क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड होकर आ जाते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट से अगर इनमें अमाउंट निकालना चाहते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर उसके बाद प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, तो हमारे निकल जाता है अमाउंट। Let's understand this. Tony's principal amount was 10,000 rupees. On the principal, he received an interest of 1,000 rupees each year. Thus, the total interest Tony received by the end of 3 years is 3,000 rupees. Now, let's look at how Bank B gave interest on the money that Anita deposited. She too invested a principal of 10,000 rupees. At the end of the first year, she received an interest of 1,000 rupees like Tony. This interest was added to the principal at the beginning of the second year. Thus, the principal for the second year was 11,000 rupees. On this principal, an interest of 10% was given, which is 1,100. Again, this principal was added to the principal at the beginning of the third year. So, the principal amount at the start of the third year became 12,100 rupees. At the end of the third year, Anita received an interest of 1,210 rupees. Thus, the total interest Anita received over a period of 3 years is 3,310 rupees. Note that in the case of Anita, at the end of each year, the interest was added to the principal. Therefore, her principal increased every year, and so did her interest amount. That's why Anita received more interest than Tony, although both invested the same amount with the same rate of interest. The interest calculated using this condition is called compound interest. Remember that in the case of Tony, we can find the interest by using the formula simple interest equal to PRT over 100. But do we have a formula to calculate compound interest? Let's try to derive the formula using an example. Tony borrowed a sum of 6,000 rupees for 2 years. The interest rate was 10% compounded annually. Find the compound interest and the amount he had to pay after 2 years. Suppose that P1 is the principal
which the interest is compounded annually at the rate of R% per annum. Therefore, P1 is 6,000 rupees and R is 10%. Let SI1 be the interest at the end of the SI tax year. equals simple interest. We use the formula for simple interest to find this interest. We also find the amount payable at the end of the first year. Let this amount be A1. This amount becomes the principal for the second year, which we consider as P2. Now, let the simple interest for the second year be SI2. We find SI2 using the principal P2. Then we find the amount payable at the end of the second year. Let the amount be A2. This amount becomes the principal for the third year. The compound interest, CI, can be calculated by subtracting the principal from the amount. If we continue this way, the amount at the end of n years is as given here. This is the general formula to find the amount payable at the end of n years when the interest is compounded annually. The principal is P and the rate of interest per annum is R. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है P × 1 प्लस R/100 और यहाँ पे होता है टाइम अमाउंट इक्वल टू P × 1 प्लस R/100 टाइम। अब इसकी वैल्यू आपको रखना है। वैल्यू रखने के बाद पहले आपका आएगा अमाउंट। अमाउंट आने के बाद है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की निकालते हैं A माइनस P अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है तो निकल जाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में P × T × R है बाई 100 करके हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो वो तो सिंपल मेथड हो गया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें। अगर हम इसे सिंपल मेथड से अगर करना चाहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के मेथड पे को एक एक ईयर का निकालना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करके नेक्स्ट ईयर में वो हो जाता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हुए नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्रिंसिपल का काम करता है। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका है क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो कोशिश करना इसके फॉर्मूले और भी कई मेथड है उसको ध्यान से रखना, उसे आप कर सकते हो।